अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सोहेल और मैं हूं ज़फ़र इक़बाल। और आज हम जिस वीडियो पर करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया मॉडर्न सिटी इन हैदराबाद हाईटेक सिटी। तो देखते हैं भाई, आपको वहाँ के गूगल का दफ्तर भी ये आई थिंक दिखाएंगे। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। Behind me is the Cyber Towers building, the very first building built in high-tech city here in Hyderabad. बिल्कुल भाई, यहाँ पर हाय It's one of the fastest growing IT बच्चे hubs ने in भी the आया बोल entire दिया। world. Let's go explore. माई फर्स्ट टाइम हाईटेक सिटी हैदराबाद। हैदराबाद बहुत भाई खूबसूरत। 1997, when this whole development and idea was just getting started. Today, there are many companies within here, Microsoft being one of them. IBM, Facebook, and that one company that starts with the letter G. There are a bunch of सारी businesses कंपनियां here in इसमें भी High-Tech हैं। City. And later in this video, I'm going to take you on a driving tour to show you them. High-Tech City stands for Hyderabad Information Technology Engineering Consultancy City. Can we say that 5 times fast? Behind me is the Trident. हर चीज़ इसमें भाई आ It's a गया। hotel. It's like there's like a park here with the gate open, so we're going inside. Make sure there's no policemen. All right, we can film here. High-Tech City spreads out over 200 acres and makes up a number of different 200 suburbs here in Hyderabad. एकर्स। अच्छा वो पूरा है। This would be an antique. बिल्कुल हाँ। We're driving through High-Tech City now. Looking at all the beautiful build around us are all the buildings that house IT ये companies. भाई in देखें भाई For भाई instance, भाई ahead of us we have Deloitte. I've seen JP Morgan. I've seen. It's also called Cyberabad, which is kind of a cool name. It's got a nice ring to it. Behind us is a 7-star hotel shaped like the Titanic ship. टाइटैनिक। It has a radius of over 30 miles, so it's pretty big. You can't just walk around it. Like, I can't just go show you all of it in one short little walk here. If you're driving out here, it's very close to Jubilee Hills, which is like the nice neighborhood here. It's like the Hollywood of Hyderabad. The actors live there. Nice hills overlooking the city. Beautiful apartments and houses. ये क्या है? बिल्डिंगें हैं भाई, वो Some of the कंपनी की। people in High-Tech City stay in buildings High-tech just इसलिए like तो this. बोलते हैं भाई Nice इसको। big skyscrapers. They're gonna cost you like 750, 800,000 to stay there. 7 लाख का। इतने सारे बिल्डिंगें भाई। The first IKEA in India. If you're liking this video, please click the like button, help the video go out to more people. There's a lot of security guards in this area, and you can just see them looking at me like, oh, I hope this guy with the camera comes here. Can't wait to get some action. Speaking of security, since you're watching this online, it's something you need as well, and why I'm thankful that Surfshark VPN is sponsoring this video and offering you a deal below. You can use Surfshark VPN on your laptop or your phone. With all the scammers out there, anyone who uses the internet needs extra protection. Surfshark VPN encrypts your data, making it useless for someone trying to hack into your account. I always use a VPN when I'm online, especially if I'm using public Wi-Fi at hotels, Airbnbs, and restaurants. As a traveler, you can also use a VPN to get lower prices on plane tickets and hotels. Because prices vary based on your location, so if you're trying to book a hotel, just connect to one of Surfshark's servers in 95 countries and check for the lowest price. I use Surfshark VPN to not get locked out of my US bank accounts while I'm overseas too. To access my US bank accounts, I'll connect to US servers and I can avoid bank account freezes and still access my money.
Or maybe you just want to watch the USA's Netflix in India. You can just connect to the USA server and then could watch the latest episodes of US shows like The Walking Dead. You also get a 30-day money-back guarantee, so you can test it out without any risk. And if you use the link in the description, you'll not only be supporting this channel, but you can also get a big discount and 3 months free. Got some little snack shops for the tech. See what kind of coffee these high-tech workers get to have. Special filter coffee. Plenty of bubbles, great flavor. I like it. It's good. Behind me is Mindspace, one of the biggest parks in the city. Let's check out the area. Mindspace. This is Bank of America. Yes. It's a shared space though, but you also have Bank of America. It stretched the entire mind space. ये कितना खूबसूरत बना था। अच्छा ये रात को और भी खूबसूरत लग रहा हाँ है। लाइटें जब Bank of होंगी। America, Accenture. Okay. There's IBM. So I'm down here on a corner underneath some of these large IT buildings. There's a number of different small eateries serving snacks, drinks. The people, the workers will come down, get themselves a chai, get themselves a Maggi noodle, and then head back up and get back to work. I'm here with my friend KC from Food Monks. He also has a channel about food here in Hyderabad and across India. We're gonna grab some lemon tea. We also made a couple other videos which you can check out here. Some lemon tea here down on the street in the IT park. Good smell. Refreshing. मज़ेदार। OpenTech, this is Facebook right here. So it's a bit like Google renting like RMZ building. Correct. बड़े बड़े दफ्तर भाई बने हुए हैं फेसबुक के, गूगल के, हर एक चीज़ के भाई वहाँ पर। In the shared space. हैदराबाद में इस This building टाइप right के over ज़्यादा here है। is the Google campus. Google campus. There's another Google campus right here. We got Deloitte behind it. Restaurants down at the bottom. So all the maps, all the locations will be done from here. Behind us is Google's headquarters. Two buildings actually. One here where they do the maps. We got another one here named Google, Western जी। Pearl. देखें भाई Cool. गूगल के नई से नई चीज़ें भाई वहाँ पर बिल्डिंगें चेक करें भाई। For me, it's impressive to think about how someone got this started 20 years ago, because this was way back when I was just like 18 years old. So this was the beginning of the internet. The minister here got funding to get this project started. And you look 22 years और ज़्यादा down बन the रहे हैं road, ना, or maybe 24 कंस्ट्रक्शन का years down काम the जारी। road. It's such a unique place here in India. Now there are other IT parks. Bangalore has them, Chennai has them, other big cities have them. But this is one of the most unique that I've seen. And I mean, I love the like charming old school Indian city where there's so much happening in a small distance. But to have the contrast of that, this modern, huge, sleek, shiny windows with reflections, that's a very cool. We're leaving the MySpace Junction area and heading to the other side of the IT parks. Casey is telling me that each of these campuses we're going to see, like Microsoft campus, they have their own basketball courts and they have their own gym and recreation. So they're really kind of like a little city onto themselves, it sounds like. To the left, it's Dell again, right here. and to the left you have HCL, Dell. Oracle,
Amazon, or it's a shared space like Mindspace buildings. सारे मेन दफ्तर बने हुए हैं, डेल हो चाहे अमेजोन हो, गूगल, हर चीज़ का We got भाई। Amazon, we got other large companies right here. Oracle. Tech Mahindra right here. Behind us is another IT park. We got Tech Mahindra, some more eateries. महिंद्रा का Lemon भी है। tea, samosa. Pani puri, juices, dosa, idli, you name it, you get it. Okay. I know a lot of the office workers work from home during the pandemic, but now they're working about 3 days a week. Across this park, there are a number of different parks where these major companies rent buildings or they have their own campuses. It does depend. They have a ton of buildings. Microsoft or Amazon might have 3, 4, 5, 6, even more buildings. And I'm happy to see that there's so many workers, people with some great jobs, down having a chai underneath these big buildings. Seeing the office workers, it is a little hard for me to relate because I've never worked in an office in my entire life. Out of college, I worked in an outdoor school for kids. Then I did some travels. Then I started working online. On this side, we have the Indian School of Business. It's like the Stanford of India, the business school. Stanford of India? Correct. Oh, okay. Yeah. Highly regarded school. Entrepreneur. We have Microsoft's campus over here, which is their development center Microsoft. for Asia, all of Asia. Microsoft This is का where you work? Okay, Casey works here. This is where the money is made. Okay, the campus for Microsoft goes for almost a Microsoft। kilometer. And then on the other side, there's another company called Wipro. I know some people really like the office culture. You got your friends there, you have coworkers. There's like a mutual सारे भाई synergy दफ्तर that उन्होंने happens दिखाए हैं when जो you're all भी working मेन on one हैदराबाद thing in में the है। same building. I know some of these teams work really, really hard too. So they have these great IT parks, they got basketball courts, they got recreation, but there's also like, you got to get the job done, and it makes sense. Another highly respected IT school here in Hyderabad. My friend was very happy with his position at Microsoft. He would come visit Redmond in अच्छा ये Washington, where डेवलप्ड Microsoft is एरिया based तो in the बहुत है, USA. लेकिन रोड्स The जो है ना वो security नहीं guard's kicking me out. Well, at least he didn't make me रोड delete भी my tape काफ़ी sometimes. अच्छे बने They हुए। ये ask, but I never अलहदा do चीज़ बनी because हुई, I पार्क साइड है ना वो talk पीछे my way out of देखें। it somehow. Check out this building. That's nice. I could work Feeling there. good, I'm happy something like this exists too because it's like, you know, people are making some money. They got some great jobs out here for these large multinational companies, putting their developer skills to work, their coding skills, their project management skills. And tune in next week for another video about beautiful India. हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। सबसे पहले उन्होंने भाई ये तो बहुत भाई मॉडर्न सिटी है हैदराबाद, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है भाई। बहुत सुना था बिल्कुल भाई, यहाँ नई से नई चीज़ें हैं भाई, बिल्कुल भाई। तो हर एक चीज़ का दफ्तर है, इसीलिए उन्होंने भाई ये वीडियो भी कम्प्लीटली भाई इस चीज़ पर थी कि उन्होंने सारे दफ्तर दिखाए, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का हो, फेसबुक का हो, कोई जो भी बड़े बड़े जो हैं भाई मेन दफ्तर हैं वो उन्होंने भाई दिखाए हैं। अमेरिका के एक दो बैंक भी उन्होंने दिखाए हैं, जैसा कि वो साथ साथ क्लियर करते जा रहे थे। लेकिन यह है कि भाई बहुत ही प्यारी सिटी है, और बाकी मेन जो दफ्तर यहाँ पर बने हुए हैं ये भी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि हैदराबाद में मुझे लगता है ज़्यादा हैं टेक के दफ्तर। बिल्कुल भाई, बिल्किंस भी में है, लेकिन ये उनका आप बोलने के एक मेन हो सकता है, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल भाई, टेक काफ़ी फिल्में भी शूट हुई हैं हैदराबाद में। आप रोडों की बात कर रहे थे तो उधर तो रोड काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने बहुत प्यारे थे, लेकिन ये ना ये दफ्तर साइड पर थे तो वो आप जो है ना वो रेडियां लगी हुई थी वहाँ पे थोड़ा सा ना ठीक नहीं था माहौल। हालांकि इस तरह के एरिया को जो है वो थोड़ा इतना मतलब कि रोड का इशू नहीं होता, कुछ हो रहे होते हैं एरिया वो, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर एंट्रीज जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती हैं। बिल्कुल भाई, वो होगा, थोड़ा बहुत एरिया होगा वहाँ पर, लेकिन यह है कि ये बहुत खूबसूरत है। आप देखें भाई, ड्रोन व्यू देखें इसके, वैसे देखें कि जितनी भाई मर्ज़ी वीडियोस देख ले, बहुत प्यारे रोड और एक दूसरे से बढ़कर बिल्डिंगें बनी हुई हैं वहाँ पर। दफ्तर इस चीज़ के बहुत ज़्यादा हैं, और इस फील्ड में ज़्यादातर भाई ये जो बंदे कोर्स करके आते हैं ना आईटी में जिनको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा हैदराबाद ही आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसी चीज़ का ये जो भाई सीईओ बैठे होते हैं, मतलब कि जो मेन
हैंडल कर रहे होते हैं ये फ़िल्म इंडस्ट्रीज़, ये मैं बोल सकता हूँ ये यहाँ पर ज़्यादा होंगे भाई फ़िल्म इंडस्ट्री के लिहाज से, क्योंकि जिनके ज़्यादा बड़े चैनल हैं इस चीज़ के, यूट्यूब पर आप देख लें कि फ़िल्म इंडस्ट्री के, और फेसबुक पर काफ़ी जॉब करते हैं लड़के यहाँ पर, फेसबुक पर, दूसरा उससे हटकर यूट्यूब पर, और भी काफ़ी वेबसाइट अब तो हैं भाई, अमेज़ोन है और भी काफ़ी आप देख सकते हैं। और ज़्यादा ये है कि जिनको भाई अपना करने की शौक़ होती है वो फिर अपना कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि एक कंट्री सिटी में आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, अगर बिल्कुल आप करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हमें तो ऐसी कोई चीज़ मैसर नहीं हुई, मैसर नहीं, बिल्कुल भाई ये चीज़ तो बिल्कुल भाई, सबसे ज़्यादा उनको पता है भाई आने वाला दौर अभी इसी चीज़ का दौर है कि आप सोशल मीडिया पर देख लें कि वो कितने एक्टिव हैं, और इस चीज़ को उन्होंने बहुत एक्टिव रखा हुआ है। और हमें यहाँ पर ऊपर से दबाया जाता है कि कोई एक बंदे को सपोर्ट करने की बजाय उसको भाई गिराने की कोशिश करते हैं, ये मैंने यहाँ पर ज़्यादा देखा है भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और भी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं भाई हैदराबाद के बारे में वो ज़रूर कमेंट में भाई शेयर कीजिएगा। तो वीडियो करते हैं एंड, अल्लाह हाफिज़।